Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the short questions of nuclear and particle physics. Let's begin. एठारे आमे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एटा गोटे डीएससी पेपर ये डीएससी पेपर रो यूनिट नंबर 1 दुईटा पार्ट गोटे जेनेराल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई अन्य गोटे पार्ट रेडियो एक्टिव डीके यार समस्त एमसीक्यू टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस सहित डैशपोरन टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस गुडी को डिस्कशन करिनेबा। प्रथम पार्टा जेनेराल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई रो एमसीक्यू टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस गुडी को वर्तमान देखिबा। Question number 1. The alpha scattering experiment by Rutherford gave a clue to the structure of Rutherford को द्वारा फेमस alpha scattering experiment conduct करा जाइथिला सेथिरु कहार स्ट्रक्चर उपरे जानिबा पाई मिलिथिला हमर एटम रे थिबा न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर संपर्क रे ए रदरफोर्ड को alpha scattering experiment रो कंक्लूजन पाइथिले आमे तेनु करी ऑप्शन नंबर सी nucleus. Question number 2. The radius of nucleus is directly proportional to the mass number. एयर केमिति रिलेट करुछि गोटे न्यूक्लियस रेडियस तार एटॉमिक मास नंबर सहित एटॉमिक रेडियस टा r इज इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3 तमने एटॉमिक रेडियस टा तार मास नंबर संगे ए टू द पावर 1/3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची। क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन टू प्रोटॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर दीटा प्रोटॉन दीटा पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट हेबे सेटा केते बेले पॉसिबल कोन छोटे न्यूक्लियर फोर्स सिचुएशन रे पॉसिबल यदि से न्यूक्लियर फोर्स रेंज रे रहइबो ता माने प्रोटॉन दीटा अट्रैक्टिव हेक रहइबो अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिवेट हे जिवो तेनु करे डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 टू द पावर -10 मीटर distance between them is 10 to the power -1 meter distance between them is 10 to the -15 meter it never happen जेहेतु ता गोटे न्यूक्लियर फोर्स रेंज रहिबो न्यूक्लियर रेडियस टा जो न्यूक्लियर फोर्स ऑर्डर टा केते 1 फॉर्मी दैट इज 10 टू द पावर -15 मीटर ऑर्डर रे रहउची जानि कि ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 टू द पावर -15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड to be the order of nuclear size ta 1 Fermi and 10 to the -15 meter. Question number 5. The mass of neutron is neutron mass ta 0 1 mu slightly greater than 1 mu slightly less than 1 mu neutron mass ta गोटे atomic mass unit थारु slightly अधिक option number C. Question number 6. The density of nuclear matter is of the order of गोटे न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी केते ऑर्डर रहउची न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यू ऑर्डर रहउची न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ मैटर। वन मास ऑफ प्रोटोन मास टाको आमे 1 mu संगे समान बोली रखुची इक्वल टू 1 mu। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. न्यूक्लियर फोर्सेस आर न्यूक्लियर फोर्सेस रो कोन कोन प्रॉपर्टीज चार्ज डिपेंडेंट चार्ज ऊपर डिपेंड करूछि कि चार्ज ऊपर डिपेंड करू नै चार्ज इंडिपेंडेंट होछि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट ऑप्शन नंबर बी टा करेक्ट जानि गछि अन्य दुईटा रहला चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई बट चार्ज डिपेंडेंट फॉर हेवी न्यूक्लियाई सेमिति किछि नै नन ऑफ द अबव यानी ऑप्शन नंबर बी टा चार्ज इंडिपेंडेंट होछि न्यूक्लियर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9. The mass defect in a nucleus with Z is equal to 2, A is equal to 4 is 0.04 mu. The binding energy for nucleon. हमको binding energy for nucleon केमिति कैलकुलेट करिबा यानी टोटल binding energy डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर टा टोटल binding energy अर्थात केते मात्रा रे एनर्जी रिक्वायरमेंट करूची हमर आइंस्टाइन का रिलेशन हमरले मास डिफेक्ट इनटू c² इज इक्वल टू mc²। मास डिफेक्ट गिवन अछि 0.04 हमर ए जो c² टा 1 mu टा 1931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर हमर एटा होछि स्पीड ऑफ लाइट c² तेन करी 931.5 त गुण दिला सिला कदे 37.26 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट कोन टोटल बाइंडिंग एनर्जी अर्थात टोटल एनर्जी टा केते
टोटल बाइंडिंग एनर्जी 37.26 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर 4 आंसर आसीगला 9.31 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 1s2 helium 2He4 फेरियम 2656 and uranium 92 235 nuclear आर बाइंडिंग एनर्जी 2.22 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट helium रो 28.3 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट फेरम रो 492 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट एंड यूरानियम रो 1786 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट रेस्पेक्टिवली व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस एगुड़िक मध्य सब स्टेबल न्यूक्लियस कौन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिते आम गोटे ग्राफ प्लॉट करथिले से ग्राफ रे तार स्टेबिलिटी उपरे एक विशेष सूचना प्रदान कराउथला सेथिरु आमर फेरम कि आयरन आयरनटा अधिक स्टेबल ऑप्शन नंबर बी। आइसोबार्स हैव द सेम आइसोबार्स सेम मास नंबर थिले ताको आम कहबा आइसोबार एटॉमिक नंबर थिले आइसोटोप तार जदि सेम न्यूट्रॉन नंबर थिबो आइसोटोन्स सेम मास नंबर आइसोबार्स। न्यूक्लाइड्स having same number of neutrons isotons quadrupole moment for a spherical nucleus is कौन से एक spherical nucleus रे spherical nucleus यानी कि से टोटाली सिमेट्रिक रह गला स्फेरिकली सिमेट्रिक तापे क्वाड्रुपल मोमेंट टा केते क्वाड्रुपल मोमेंट इज 0 केउटा 0 आसीबो स्फेरिकल न्यूक्लियस पई केउटा पॉजिटिव आसीबो केते बेले तार जदि शेपटा हेथिबो प्रोलेट स्फेरॉइड केउटा नेगेटिव आसीबो तापे तार आकृतिटा प्रोलेट सॉरी भूल कहली दैट इज ओब्लेट स्फेरॉइड पई नेगेटिव प्रोलेट स्फेरॉइड पई पॉजिटिव क्वाड्रुपल मोमेंट 0 पई तार आकृतिटा गोटे स्फेरिकल हेथिबो ये सारी गला एमसीक्यू क्वेश्चंस गुड़िक नेक्स्ट तार डैशपूरण क्वेश्चंस गुड़िक आम देखा डैशपूरण क्वेश्चनटा रहा आमर न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 7 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ये देखीचे केजी पर मीटर क्यूब फॉर ए मास नंबर ए इज इक्वल टू 56 सॉरी हाँ ठीक अच्छे आमर मास नंबरटा देला 56 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डैश एंड इज इक्वल टू 8.8 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट तार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियनटा एतिक सांगे सामान अच्छे 8.8 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट एटा तार सबुठार अधिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन व्हिच वन इज मैक्सिमम द पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डैश एंड इट्स डैश नंबर पैकिंग फ्रैक्शनटा रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द atomic mass and its mass number that is packing fraction definition in cell model the filled cells have a total angular momentum L equal to cell model रे कौन से एक सेल टोटाली फिल्ड है फिल्ड सेल अच्छी तापे टोटाल एंगुलर मोमेंटमटा का संगे समान आसीबो टोटाल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 द इंट्रिंसिक पैरिटी ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन इज प्रोटॉन किंबा न्यूट्रॉन से गुडिक पई इंट्रिंसिक पैरिटा इवन आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 द डेविएशन ऑफ एटॉमिक मास फ्रॉम द होल नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड पूर्व मध्य तार डेफिनेशन कहथिले पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन पैरिटी मीन्स डैश ड्यूरिंग न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन पैरिटी कहले आम बुझुचे पैरिटी कनसेप्ट हो कौन गोटे न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन सिचुएशन रे पैरिटी कनसेप्ट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस व्हिच हैज स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकली सिमेट्रिक रहिले क्यूटा केते आसीबो 0 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q is 0। क्वेश्चन नंबर 9 magnetic moments of electrons and nucleus interact and this interaction splits the atomic levels which give rise to the dash structure सेटा से एटम रो हाई फॉर फाइन स्ट्रक्चर को ही डिफाइन करुचे
hyper fine structure. Magnetic moments of electrons and nucleus interact. This interaction splits the atomic levels, which give rise to the hyperfine structure. Next, question number 10. The evidence of the tensor force comes primarily from the observed dash moment of the ground state of the deuterium. Observed quadruple moment, that is quadruple moment. Question number 11. Cross sections are measured in the unit of, cross section को measurement करूचे unit bar. Next, question number 12. The magnetic moment of an object is a measure of the object's tendency to align with a dash field. से क्यों field संगे align होची? Magnetic field संगे aligned with magnetic field. First part तार MCQ ता सहित डैश प्रॉब्लम टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस गुड को आम देखने बर्तमान आम देखा द्वितीय पार्ट यूनिट नंबर 1 रो द्वितीय पार्ट रेडियो एक्टिविटी यार एमसीक्यू ता सहित डैश प्रॉब्लम टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस गुड को प्रथम एमसीक्यू क्वेश्चंस गुड को बीटा रेज एमिटेड बाय द न्यूक्लियस आर न्यूक्लियस जो बीटा रे एमिट होची से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग इट charged electrons from inside the nucleus and neutral particles. Beta particles or beta rays emitted by the nucleus are charged electrons from inside the nucleus. Question number 2. The reciprocal of radioactive decay constant is called decay constant reciprocal ta mean life period. Alpha and beta particles cause ionization because of ionization पछर कारण कौन photo electronic emission, Compton's effect, pair production, electrostatic force. Ionization कारण होची electrostatic force. The half life of a radioactive element depends on कहाँ पर डिपेंड करूची टेम्परेचर डिपेंड करूनी प्रेशर ना नेचर ऑफ द एलिमेंट ओके नेचर ऑफ द एलिमेंट सहित डिपेंड करूची हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल या नुहे केवल तार नेचर उपरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू 20 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ स्टील अल्फा बीटा गामा ऑल ऑफ द एबव गामा रेटा 20 सेंटीमीटर थिकनेस स्टील मध्य पास करी जाई परिबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुटे गामा रे half life of radium is 1600 years. The fraction of the sample of radium that would remain after 64,000 years केते रहइबो ए भले क्वेश्चन को हमें सिंपलीफाई करिया पई फास्ट कैलकुलेट कर देबा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स केमिति जानिबा ना टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टोटल टाइम ला केते लागुची हमर 6400 हमर हाफ लाइफ केते अछि 1600 घर लाइम पाइ जबा 4 4 टा कोन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आसीगला 4 तेज केते फ्रैक्शन रिमेनिंग रहिबो हाफ टू द पावर n होची तार फॉर्मूला जा साहाଯ୍य रे हमें कैलकुलेट करिबा फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल केते बळी पडुची बोली 1/2 टू द पावर 4 ये आसीगला 1 डिवाइडेड बाय 16 मतलब ऑप्शन नंबर बी 1 डिवाइडेड बाय 16 एते की सैंपल ऑफ द फ्रैक्शन वुड रिमेन Curie is of the unit of Curie टा कहाँ रे यूनिट एनर्जी ऑफ गामा रे हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी इंटेंसिटी ऑफ गामा रे Curie टा रेडियो एक्टिविटी रे यूनिट रेडियम रे डिस्कवर करथिले मैडम क्यूरी तांको ना अनुसार तांको रेस्पेक्ट रे ए यूनिट टा को यूज करा जाय छी क्यूरी रेडियो एक्टिविटी रे यूनिट क्यूरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 Gamma ray photon produces an electron positron pair which moving a kinetic energy of 0.01 mega electron volt. The energy of the gamma ray photon energy केते first rest mass energy केते 2 times of m naught c square बा rest mass of that electron into c square rest mass of electron 0.511 एते की मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट पर c square थियो तेन 2 times of एति के गेले 1.022 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट आसी गेला तो काइनेटिक एनर्जी आम केमती पाई ना 2 × 0.01 ये गला 0.02 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट फाइनली आमको गामा रे फोटोन रो एनर्जी कैलकुलेट करिया पड़ो रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी 1.022 प्लस काइनेटिक एनर्जी 0.02 फाइनली गामा रे फोटोन रो एनर्जी 1.042 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट
1.042 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 न्यूट्रिनो इज ए पार्टिकल विथ न्यूट्रिनो आम क्या कहे चार्जलेस पार्टिकल हैज नो स्पिन चार्जलेस पार्टिकल हैज ए स्पिन चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन एंड हैज स्पिन द सेम एज न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो होचे गोटे चार्जलेस पार्टिकल किंतु तार स्पिन अच्छी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो मध्य तार एंटाई पार्टिकल। नेक्स्ट ए पॉजिट्रॉन हैज द सेम मास एज पॉजिट्रॉन कार मास संगे समान इलेक्ट्रॉन मास संगे समान प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन मास इलेक्ट्रॉन मास संगे समान। In which radioactive disintegration a neutron is dissociated into a proton and an electron गोटे न्यूट्रॉन डिसोसिएटेड हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सीटा आम क्यों क्षेत्र में देखुचे अल्फा इमिशन He++ इमिशन बीटा इमिशन गामा इमिशन पॉजिट्रॉन इमिशन विशेष भाव में आम बीटा डिके ही देखुचे जे न्यूट्रॉनटा केमी डिसोसिएटेड हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को आम प्रोटॉन केमी न्यूट्रॉन पाचे कि न्यूट्रॉन केमी प्रोटॉन पाचे यार कन्वर्सन केवल बीटा डिके ही पॉसिबल होची आज रिजल्ट इलेक्ट्रॉन बाहर कि पॉजिट्रॉन बाहर। नेक्स्ट रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय रेडियम क्यों साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर करा जायतिला पेरी क्यूरी एंड मैडम क्यूरी बेक्रेल रदरफोर्ड जेलियट एंड थॉमसन पेरी क्यूरी एंड मैडम क्यूरी रेडियम डिस्कवर करथिले पूर्वर मध्य हम कही ना अनुजाई क्यूरी रेडियो एक्टिविटी यूनिट रखा जायतिला। द रेडियो एक्टिव फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विथ रेडियो एक्टिव फेनोमेनन कहले कौन बुझुछ क्या सांगे से एसोसिएटेड होची कंटिन्यूअस बा स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन इंटीग्रेशन प्रोटॉन डिसइंटीग्रेशन रेडियो एक्टिव फेनोमेनन कहले स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई। नेक्स्ट आसी जाउछि हमर क्वेश्चन नंबर 14 ए क्यूरी इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इट्स वैल्यू इज गोटे क्यूरी कहले आम कौन बुझे 3.7 इंटू 10 to the power 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 to the power 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 1 रदरफोर्ड कहले 10 to the power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 to the power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अल्फा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन ए पॉजिट्रॉन ए हीलियम न्यूक्लियस रन ऑफ द गोटे डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होची अल्फा पार्टिकल ऑप्शन नंबर सी ए हीलियम न्यूक्लियस इज अल्फा पार्टिकल। ए लॉन्ग लाइव्ड एक्साइटेड न्यूक्लियस इज कॉल्ड गोटे एक्साइटेड न्यूक्लियस ये अधिक समय बंचुची ताको हम कहूँ आइसोमर आइसोटोन आइसोटोप आइसोबार ताको कहूँ आइसोमर आइसोटोन क्या कहे सेम न्यूट्रॉन नंबर आइसोटोप सेम आमर तार आटमिक नंबर सॉरी तार आटमिक नंबर जेटा सामान रोची आइसोबार तार मास नंबर सेम था अधिक समय बंचा थे आइसोमर। न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस वाज पुट फॉरवर्डेड बाय फर्मी टू एक्सप्लेन न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस फर्मी के द्वारा प्रथम इंट्रोड्यूस कराइला क्या बुझापी अल्फा टिके बीटा टिके गामा टिके नन ऑफ द अबव बीटा टिके को बुझापी बीटा टिके फर्मी ही इंट्रोड्यूस कराइले बीटा टिके बीटा रेडियो एक्टिविटी इज स्टडीड अंडर दिस 3 हेड्स बीटा रेडियो एक्टिविटी आम केमी इलेक्ट्रॉन एमिशन इलेक्ट्रॉन कैप्चर पॉजिट्रॉन एमिशन इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉजिट्रॉन कैप्चर न्यूट्रॉन एमिशन पॉजिट्रॉन कैप्चर इलेक्ट्रॉन कैप्चर पॉजिट्रॉन एमिशन न्यूट्रॉन कैप्चर पॉजिट्रॉन कैप्चर बीटा रेडियो एक्टिविटी आम स्टडीड कहे इलेक्ट्रॉन एमिशन तापर इलेक्ट्रॉन कैप्चर देन पॉजिट्रॉन एमिशन ऑप्शन नंबर ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकटा गामा रेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रहिबो अल्फा नुहे कि बीटा नुहे गामाटा होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 गेगर न्यूट्रल रिलेशन गिव्स द रेंज ऑफ गेगर न्यूट्रल रिलेशन रे हमें कहार रेंज ऊपर आइडिया पाउचे अल्फा बीटा गामा न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल रेंज ऊपर आइडिया पाउचे। पार्टिकल इज नॉट कन्जर्व्ड इन पार्टिकल के कन्जर्व्ड होनी अल्फा टिके ना बीटा टिके ना गामा टिके ना नन ऑफ दी और बीटा टिके रे कहचे जे पार्टिकलटा कन्जर्व्ड नुहे बोली पार्टिकल इज नॉट कन्जर्व्ड इन बीटा टिके। रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड एमिट्स अल्फा बीटा गामा इन सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस दैन द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियाई बाय अप्रोक्सीमेटली रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड अल्फा बीटा गामा सक्सेसिवली डिसइंटीग्रेट करुच्ची जो प्रोडक्टर मासटा कमी जाउची ओरिजिनल न्यूक्लियर मास केते ता अप्रोक्सीमेटली 4 mu भाया। थ्योरी ऑफ बीटा डीके वाज गिवन बाय बीटा डीके थ्योरी क्या द्वारा प्रपोज करा जाइथिला से होछन फर्मी फर्मी
जहाँ साहाय्य आमे जानीपर जे केमिति प्रोटॉन टे न्यूट्रॉन को कन्वर्ट हो कि न्यूट्रॉन टे प्रोटॉन को कन्वर्ट हो जाए। द डीके कांस्टेंट ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव सीरीज डीके कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रेडियोएक्टिव सीरीज डीके कांस्टेंट 0 ऑप्शन नंबर ए। टनल इफेक्ट इन्वॉल्व्स टनल इफेक्ट के आम देखा पाचे लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस्केप प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स द लीकेज अल्फा पार्टिकल्स गामा डीके। टनल इफेक्ट आम देखा पाचे अल्फा पार्टिकल लीकेज रे गोटा गामा टेलर सीरीज रे जाना पाते। नेक्स्ट तार डैशबोर्ड टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस गुडी को हम देखि नबा। क्वेश्चन नंबर 1 रही द रेट एट व्हिच द न्यूक्लियाई ऑफ इट्स एटम्स डिसइंटीग्रेट इन द सैंपल इज नोन एज डैश ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ताको तार एक्टिविटी बोली कहा जाए व्हिच इज नोन एज द एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस वाज पुट फॉरवर्डेड बाय डैश टू एक्सप्लेन द बीटा डीके। न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस साइंटिस्ट फर्मी को द्वारा बीटा डीके को बुझापी। The smallest value for half-life period can be as small as dash and the largest value may be dash। सबुठार छोट वैल्यू केते पारिबो और 10 to the power -16 सेकेंड and the largest value सबुठार अधिक हो पारिबो केते 10 to the power 9 ईयर। नेक्स्ट 1 मिलीक्यूरी इज इक्वल टू डैश डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड 3 into 10 to the power 7 गोटे मिलीक्यूरी 3 into 10 to the power 7 disintegration per second। In dash transmutation when a target nucleus is bombarded by high energy particle it gets converted into a different element। से प्रकार ट्रांसम्यूटेशन होची आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन ताकू मनुष्यकृत करा जाय परिबो। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन रे गोटे टार्गेट न्यूक्लियस को आम बम्बार्ड करवा कौन गोटे हाई एनर्जी पार्टिकल द्वारा ताको परिवर्तित कर पारे अन्य गोटे न्यूक्लियस को से प्रकार ट्रांसम्यूटेशन को आम कहूँ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 6 द टू इम्पोर्टाट मेथड्स यूज्ड फॉर डिटरमाइन द एज आर डैश एंड कार्बन डेटिंग। गोटे तो हूँ कार्बन डेटिंग अन्यटी कौन अन्यटी हूँ यूरानियम डेटिंग आम एज को कैलकुलेट करने यूज करुचे यूरानियम डेटिंग कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन व्हिच प्रोड्यूसेस 1 ESU इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज इन 1 cc ऑफ ड्राई एयर। डैश इज डिफाइंड एज इटा हम एक्सरे ऊपर इटा एक्सरे टाउ दैट इज रंगटन 1 रंगटन इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन व्हिच प्रोड्यूसेस 1 ESU ऑफ चार्ज इन 1 cc ऑफ ड्राई एयर। कार्बन डेटिंग इज यूज्ड व्हेयर पेरेंट एलिमेंट इज डैश एंड द डॉटर एलिमेंट इज डैश। कार्बन डेटिंग व्यवहार करा जाए जो पेरेंट एलिमेंट होची 14 कार्बन डॉटर एलिमेंट होची 12 कार्बन आइसोटोप 14 गोटे 12। ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन एज हाइड्रोजन हमारा आसीगला न्यूट्रिनो आसीगला गोटे न्यूट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन के प्रकार रिएक्शन यहाँ हूँ गोटे बीटा डीके रिएक्शन इनवर्स बीटा डीके। नेक्स्ट क्वेश्चन During beta decay, two types of particles dash and dash are emitted from the nuclei of certain unstable radioactive nuclei। beta decay रो जो दीटा पार्टिकल गोटे होची इलेक्ट्रॉन अन्यटी पोजिट्रॉन गोटे होची इलेक्ट्रॉन अन्यटी होची पोजिट्रॉन। ये थिला डैशबोर्ड टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस एवली भाव रे समस्त एमसीक्यू टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस एवं डैशबोर्ड टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस को आम डिस्कसन करिनेले ता थिला न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स डीएससी पेपर यूनिट नंबर 1 गोटे पार्ट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई अन्य गोटे पार्ट रेडियोएक्टिविटी डीके। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर एमसीक्यू क्वेश्चंस गुड़िक परवर्ती समय
fill in the blanks type questions. Next अन्य गोटे पार्ट रेडियो एक्टिविटी डीके तार एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस गुड़िक समुदाय 26 एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ये पार्टार ता सहित फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस गुड़िक रेडियो एक्टिविटी डीके रो. So with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.